So my first question to you is, how are the present energy trends impacting the demand for green or sustainable wires and cables in India? There is a good demand for wires and cable. In terms of green, first of all, I would like to know that how many people understand what is the green. See, in wire and cable, more than green. See, as a company, EPR Kabel, we are the only company in entire India which is 100% REACH compliance. So it goes green, number one. Number two, in wire and cable, we should, rather than green, we should talk about the safety. So here, green is a little side by, but the more question on safety. So rather than green, we should focus on safety. When we talk about safety, what kind of measures in place? Yeah, see, safety, biggest problem is what you know. That, see, we need to understand what's happening in the global world and what's happening in India. Like, see, in all over the world nowadays, in high-rise building, residential, and commercial building, everyone use LSOH wire, no smoke, zero element, right? And India still we use PVC wire. And any electrical product, or as any product in your house or office or mall, the most dangerous thing is PVC. See, people don't die because of fire. People die because of smoke. And PVC gives the maximum smoke in terms of visibility, in terms of gas emission. You are unable to breathe, unable to see. So that's the biggest dangerous. And at the max, what's happening in India, people use FRS wire. See, FRS wire, first of all, I would like to, from this channel, see, nowhere in the world, because see, we have the largest cable from India, and I myself have traveled to 99 countries and we are present in 80 countries. No wire as such FRS wire in building wire. FRS is it's a PVC, but it's a modified PVC. So, for example, in smoke, PVC wire smoke is 100, in FRS is 70. So, whether you use PVC or FRS, it's the same quality of smoke will be there, only smoke is a little less. Whereas in LSOH wire, the smoke is 4%, non-toxic, non-corrosive and transparent. So that should be a mandatory. So this is the biggest challenge of safety. Now I'll give a couple of examples, like this new parliament is coming, Central Minister, right? Still they are using FRS wire. From the nation is going to leave, nation is going to run from the place. It's such a national monument. And if you look into the safety, they are using FRS wire. So these are the big challenge in wire category. They should use LSOH wire that the whole world is using now. And still we are into either PVC or FRS. So this is the biggest challenge. What are the other challenges we are facing in promoting these wires to bring them in application? See, we as a company promoting, but see other company, you must have seen, they say wire don't catch fire. So first of all, there is no wire as such which does not take fire. Wire should not be there. Wire does not give smoke. तो दुनिया में कोई ऐसा वायर ही नहीं है जिसमें अपना फायर नहीं पकड़ता है. So it's a wrong myth we are there in the world. Yeah. So that's a big challenge. So we as a company, we are promoting. Even consultant know. The problem is when it comes to cost, and there is not much cost difference. See, first of all, we need to understand in any project, in any building, the cost is around 2,500 rupees or 3,000 rupees maximum square feet. In that, electrical is 10%, so 300 rupees. And out of this electrical, how much is cable and wire? Because it's an invisible product, it goes behind the wall. First of all, lack of knowledge, lack of awareness, and it's not visible product. So it's a low interest category even for consultant, even for the actual user, even for the architect, even for the builder. Because when you go to buy the flat or you buy the office, you see which marble is there, which switches are there, which fan is there, but nobody has which wire is there. So this is a big challenge. And people know that this is a challenge. Then again, there's another second challenge in India, one more. Nowhere in the world, that panel wire, which is used in electrical panel board, and house wire, which is used for installation wire, right? They don't have a single standard. Always, if you go to UK, you will find for panel wire, they got BS6231. For building wire, they got BS604. In India, it's only I694. So what happened now? You see, more than 55% product, 60% people, they are making class 5 conductor which is used for panel wire. The panel wire, they are using into house wire. So because the cost is coming down, because copper is less. So just because of 4 to 5%, then your energy cost is increasing.
chances of fire are more higher. Still people are using and companies are making. So we as a company, we don't sell in retail, but in project we also started. So any big project, not even a single project, right from Wipro headquarters to Azim Preti University to Parliament to the smallest builder, everyone is using class 5 conductor. So where is the safety? Because I'm fighting, I went to gas, I convinced them, they agree, but then other manufacturers all in support. But this is a big challenge. This is nowhere in the world. First of all, the wire which in India we make flexible wire itself is wrong. But if I talk everything wrong, then people say why I'm also making it. Because see, house wire was reserved for small scale industries. So one company, first company they started while this making flexible wire as an industrial wire and it started in a house. So that's why everyone is making flexible wire. So first of all, this class 5 conductor is even see we got factory in Bangladesh. We export to right from US to the poorest country, from UK to all the poorest country. But nowhere in the world this class 5 conductor wire is there or flexible wire is there in building wire. So technically very non product. And I would like to tell you from this platform, in India, total electrical products standard are the lowest in the world. Not only in wire and cable, including transformer, you name anything. Except electric motor, everything is below standard. So when we talk about... And after road accident, highest people dies in fire. So government statistics from 2001 to 2014, I got statistics that 52 people died every day. Means how many you can calculate. So for road accident, Nitin Gadkari is working. नया कानून नया सोच रहा है. Whatever a fire. ऐसा नहीं कि CFO को मालूम नहीं है. CFO also knows. Everyone knows, but nobody is taking action. जब कमला मिल में आग लगा कि अपना उपार थिएटर से शुरू हुआ. First is from उपार theatre to आर्मी हॉस्पिटल कलकत्ता, Kamla mill, that Surat coaching classes. Why people died? People didn't die about fire. They could not find the exit way. Exit way क्यों नहीं मिला? क्योंकि PVC का धुआं हो गया. धुएं से उसको देखने को नहीं मिला. Exit कहाँ से नहीं है? मर गया. उपार थिएटर में 105 आदमी मरे. 3-4-5 दिन चला. उसको 20 साल बाद कोर्ट में अपना जेल में जाना पड़ा. तो these are the big challenge. There's a difference being used over here, like the flame retardant wires and flame resistance wires. So how do we address the difference and create an awareness about the difference among the buyers? See, first of all, flame retardant, flame resistant are more of marketing words. You have to tell people. Again, I'll come. It has to be zero smoke. Smoke is the biggest challenge. कितना भी आग लगने में smoke नहीं होना चाहिए. Flame retardant क्या करेगा कि वायर को जलने में थोड़ा टाइम कम लगा देगा. Flame resistant वायर को जलने में थोड़ा टाइम कम लगाएगा. जल के धुआं तो निकलेगा ना. अगर PVC है, FRS है तो धुआं तो आना ही आना है. तो वही काला धुआं आने वाला, वही जहरीला धुआं आने वाला है. लोग मरेंगे. तो rather than flame retardant, flame resistant, it should be zero smoke wire. तो ऐसा नहीं है प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. Not only our company making, many companies are making now. When we started, we are the only company, right? We are the first company in India. But today, many companies are making. These are the big challenges. So what can be the solution to address or meet these challenges? Solution is only that government should make a law. अपन तो बगल डरने के मानते नहीं है. So जैसा लॉकडाउन लगाए तो लोग घर में बैठे ना. वो तो बैठते थे ना. मास्क फाइन है तो मास्क लोग लगाते ना. अब मास्क का फाइन रहेगा. मास्क भी लगाएंगे. लॉकडाउन खुल गया. लोग घूम रहे हैं आराम से. तो we as an Indian we believe in कि डरना मारेगा तो सुधरेंगे. Simple. Solution is only this. Yeah. Government should bring a good law, strict law. So any particular thing that you are expecting from the government? Yeah, I'm trying very hard, but only problem is that only I'm as the other couple only we are trying hard. Nobody is there interested. Everybody is also making money. I'm fighting for the safety. That's a big challenge. हम सच बोलते हैं. हमने हमारा कैंपेन किया. ऐसा कोई वायर भी इसमें आग नहीं लगता है. अभी भी लोग झूठ बोलते हैं. वायर डोंट कैच फायर. हमारे यहाँ झूठ एडवर्टाइजमेंट का भी कानून नहीं है ना. सही बोले आप. तो इस पे how is the industry reacting to bring in these smoke free wires or नहीं सी इंडस्ट्री के लोग इंटरेस्टेड भी है ना. तो किसी को सही काम करना ही नहीं है ना. तकलीफ भी है ना. दैट्स अ बिग चैलेंज. अगर सब लोग साथ में करते तो हो सकता था. ऐसा बात नहीं है. इट्स गुड फॉर इंडस्ट्री आल्सो. हम लोग को ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अच्छा है क्योंकि वो तो वायर दूसरा बनाने का है. इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले इतने बना नहीं सकते. फिर भी मालूम नहीं क्यों इंटरेस्टेड है. So how is RR Cable moving ahead with in bringing new products? हमारी ग्रोथ है. हमारे नया प्रोडक्ट कर रहे हैं. Luckily we got very good exports. So we are balancing it. We are trying very hard. And I am very hopeful that the day will come. One day will come. It may take another 1 year or 10 years or 15 years, but the people will realize this. So we are long-term player as RR Kabel. Cannot be in hurry. But as a company, we see. हम आवाज ज्यादा नहीं करते. हम काम ज्यादा करते हैं. We are the only green company. 100% मेरा reach compliance है. पूरा कम. इसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो बनाने से मैं पूरा कंपनी को अपने आप को ग्रीन बोल नहीं सकता. इसलिए बना रहा नहीं.
I know that if I make their product, I'll make money, but we don't know to do like that, you know. So what are the new products New products, in line with the safety? I tell you now, actually government has made it, NBC has given a guideline, right? हमारे लिए क्या होता है कि सब guideline आता है, कानून कोई नहीं बना। NBC has made a guideline, नेशनल बिल्डिंग कोड जो guideline बनाया उसने कि जो common area जो केबल है, it has to be fire survival cable. I want to ask, not even a 1% developer are using this fire survival cable. और fire survival cable में भी government ने aluminum fire survival cable को दे दिया। Then I fought from other platform कि एल्यूमिनियम आग लगती है तो टेम्परेचर होता है 250 डिग्री और एल्यूमिनियम 650 डिग्री में जल जाता है और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है कि एल्यूमिनियम का फायर सर्वाइवल केबल होता है। फिर चेंज करके उन्होंने कॉपर किया। तो these are the knowledge we as a country, the people who give the specification, people who make the rule, this kind of knowledge they have. That's a big challenge. Again, यहाँ पे pricing factor is also a challenge because copper costs more. प्रोडक्ट यूज का नहीं है ना। इससे अगर एल्यूमिनियम फायर सर्वाइवल केबल लगाएंगे तो आग लगेगी तो एल्यूमिनियम में जल जाएगा तो केबल रहेगा क्या करूंगा? कॉस्ट तो नहीं है ना सवाल, कॉस्ट तो ठीक अलग चीज है, कॉस्ट तो है ही है, लेकिन जब प्रोडक्ट यूज करेंगे क्या फायदा ना आपका? Then looking at this, what will drive the energy sufficiency for our nation? See, sufficiency तो क्या है, नए पावर प्लांट आ रहे हैं, सोलर आ रहा है, सब आ रहा है। एक तरफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम एलईडी लाइट की बात कर रहे हैं, पावर सेविंग हो गया। पंखे में चेंज होकर बीएलडीसी फैन आ रहा है, जनवरी से नया रूल हो रहा है कि बीएलडीसी फैन में भी हो गया, लेकिन वायर की बात ही नहीं हो रही। अरे जो करंट दे रहा है उसकी बात करो ना, मैं उधर ही पूरा वेस्टेज कर देता हूँ। तो इट हैज टू बी फर्स्ट स्टार्ट विद वायर, देन द फैन, द लाइटिंग शुड बी स्टार्ट। ये हमारा उल्टा है, पहले लाइट किया, फिर पंखा किया, अब एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे, फ्रिज की बात करेंगे, और इन सबको जो करंट दे रहा है वो एनर्जी एफिशिएंट कैसे, उस पर सोचना चाहिए ना। So then what are your views on green energy movement then? जी, मैं तो ग्रीन एनर्जी मूवमेंट का आपको बताता हूँ कि जितने इंडिया में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगे उसमें किसी में भी सोलर वायर एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। सोलर प्रोजेक्ट लगे हैं, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पे, इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट ने लगाया है, गवर्नमेंट ने के लिए लगाया है, उसमें एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर है। एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, वायर केबल शॉप। तो ये क्या होता है कि सोलर के जितने प्रोजेक्ट होते हैं उसकी 5 साल की वारंटी होती है, 5 साल के बाद होता नहीं। तो अभी 10 साल के बाद समझेगा कि जब पावर का उसका प्रोडक्शन कम होना शुरू होगा तो मालूम पड़ेगा उसको। तो अभी आपने जो कहा वो एकदम प्रॉपर है, सही है, बट नाउ दैट वी आर फेसिंग एनर्जी चैलेंज अराउंड द वर्ल्ड, सो इसका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा? अभी ऊपर से वी ऑलरेडी हैव वायर्स का इशू है हमारा फायर के ऊपर से, तो ये सारी चीजें हैं, उनका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा? हाँ, तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले शुरुआत जो है एनर्जी एफिशिएंसी का वायर केबल से होना चाहिए। आप एंड प्रोडक्ट से लगे तो जैसे भी चले ना, शुरुआत इफेक्ट तो पड़ ही रहा है ना, पर कौन सुन रहा है ना। आज पूरे जितने वायर लग रहे हैं, मैं बताऊँ 2013 के बाद ये चेंज हुआ गैस का, 15 से लगभग जितने प्रोजेक्ट बने, जो छोटे छोटे घर बने उसमें इंटीरियर में स्टिल पीपल आर 90 मीटर में क्लास 2 कंडक्टर है, और तो क्लास 5 कंडक्टर चल ही रहा है ना, क्या करूंगा? तो बिग चैलेंज, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इजीली वायर की क्वालिटी और केबल की क्वालिटी चेंज करने से 5 से 10% की सेविंग हो सकती है। हाई साइज में 10-12% हो सकता है, और इसमें 10-12% ह्यूज है। आज ये पंखे सारे बीएलडीसी में शिफ्ट होंगे, इट विल टेक 15 to 20 years एंड इफ इज गोइंग टू बी यूज्ड, इट्स अ गुड प्रोडक्ट बीएलडीसी। लेकिन फिर भी वही इसकी जिससे शुरुआत हो रही है उसमें कुछ ठीक चल रहा है। तो आरआर केबल इज एंटायरली इनटू आप लोग का इनिशिएटिव्स, प्रमोशन सब इसी लाइन में है। तो what are the new initiatives that we can expect in the coming years from RR Group? जी, हम तो सब अच्छा बनाएंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, क्वालिटी से हमें सेल का we will not compromise on quality, we don't want to play with the safety of these people. These are all the issues, and we'll make the best product available in the world, in India, for Indian people and global people. So what is your advice to the industry players? For cost, we should make the most safest cable technology available in the world. We should make the most safest wire and cable both all together. Like see, in Delhi metro जब पहली बार बना तो उसमें वाटर टाइट केबल लगा फर्स्ट, राइट, वो पूरा दुबई से इंपोर्ट हुआ, यूके से। अभी जितने मेट्रो स्टेशन बंद है उसको कौन सा केबल लगा, वो चेक कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। तो पहला दिल्ली मेट्रो बना तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान रखा, सीजन साथ में सब अच्छे से हो गया। अब वो जितने मेट्रो, क्योंकि क्या होता है कि वाटर टाइट केबल इज अंडरग्राउंड, राइट, और या तो जमीन में पानी होता है, या बम्बई जैसी जगह में अपने बरसात में होती है, चेन्नई में फ्लड होता है, तो उसमें केबल की लाइफ कम हो जाती है। तो देयर इज उसमें 2% कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है, 2.5% मैक्सिमम। That's a big challenge. But challenge is a very challenging subject. Hardly 1% people think mineral water, right? वो भी occasionally. उसके लिए आपके कानून कायदे बने हुए सेफ्टी के। और वायर एक तो ऐसा चीज है, इलेक्ट्रिकल ऐसी चीज है कि आप गरीब हो कि अमीर हो,
इलेक्ट्रिकल तो आपको चाहिए। जिस चीज में 100% लोगों को जरूरत है, उससे ज्यादा और तकलीफ है कि मैं आपके घर में आ रहा हूँ, आपका घर अनसेफ है और आपके घर में कुछ हो गया तो मेरे को मैं मर जाऊंगा ना। तो उससे मोस्ट इलेक्ट्रिकल के जो फार्मा से भी ज्यादा कड़क कायदे अगर किसके लिए होने चाहिए ना, जहाँ 100% मैं मेरे घर तो ठीक है, मैं जिसके घर पे जाता हूँ, जो रेस्टोरेंट में जाता हूँ, जो होटल में रुकता हूँ, कि शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, वहाँ तो सबके लिए लागू होता है ना, वहाँ तो सेफ्टी होनी चाहिए ना। तो आपको EPR मैगजीन के माध्यम से फ्रंट लाइन न्यूज कि दैट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्टेस्ट रूल होने चाहिए इंडिया में फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल। और लोग फायर में सेकंड हाईएस्ट इंडिया में, लोग रोड एक्सीडेंट में फायर में सबसे ज्यादा मरते हैं। Definitely, sir. Definitely, we'll take a note of it. Yeah. Definitely. Thank you so much, Mr. Kabra. Thank you so much for your time.